Welfare, USAID, the Union Corporate TB Pledge, and aligned with Azadi Ka Amrit Mahotsav. With great pride, we welcome the Chief Guest, Honorable Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India. So, we are requested to come on the dais, please. Ms. Renika Grover, please do the honor.
cases of TB to DOT services. And lastly, and most importantly with TB, it's critical to ensure food supplements are complemented with medication. We link the beneficiaries through Nikshay ID with government scheme of availing monetary monthly benefits. Elimination of TB by 2025 is a mammoth task. This is a laudable aspiration, and we are fully committed to work with the government to eliminate TB. As a large corporate, we recognize the detrimental impacts of TB and the steps that need to be taken to eliminate it completely, the way we managed to do it for polio. Our efforts in the elimination program have expanded and cover our entire value chain. We have started to raise the awareness of TB, and with our supply chain partners, we plan to increase it further. We recognize that we can't do this alone and need to collaborate with different stakeholders to explore the synergies aimed at servicing all the stakeholders better. Our collaboration with Union and the USAID has triggered a domino effect, leading other corporates to join the program. We've mobilized nearly 30 corporates to join the TB pledge, and we assure you that we will continue our journey in this domain. I will once again end by just saying, TB harega, desh jeetega. Thank you. Thank you, sir, for giving us insights on Apollo Tyres' commitments towards the trucking community. Proceeding further, we have an AV entailing Apollo Tyres Foundation's initiatives in making healthcare accessible for the trucking community, particularly towards TB elimination. May I request the team to play the AV, please? Truck drivers are our heroes, the lifeline of India, traveling through nights and tough terrains. Yet the heroism that they bring to real life is unsung and uncelebrated. Life may not be easy for our heroes, our trucker community, but we at the Apollo Tyres Foundation will ensure that we stand by these heroes and support them in every possible way. With over 1,000 peer educators, 32 clinics across 19 states, and dedicated medical teams, we began our journey to honor the silent heroes of the road. With mobile vans, awareness programs, wellness drives, yoga sessions, medical consultation for various ailments our drivers suffer from, including vision care and medicinal support, we began treading the path of being a constant support system for these drivers and their families. Various efforts are being made to eliminate TB. However, the road ahead is really long, as India accounts for about a quarter of the world's TB cases. Apollo Tyres Foundation has been working relentlessly since 2017 to eliminate tuberculosis. The project is in technical partnership with the Union, an initiative supported by USAID. The project employs various methods to generate awareness on TB, such as conducting awareness camps, rallies, one-to-one interaction, street plays, distribution of informational and educational material for the target population. मैं 8-10 साल से गाड़ी चलाता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे को खांसी की शिकायत थी। किसी भाई के जरिए मैं अपोलो टायर क्लिनिक में गया, वहाँ मेरा चेकअप हुआ। उसके बाद मेरे को टीबी बताई गई और अब मेरा इलाज चल रहा वहाँ से। At every healthcare center, there are a series of services such as doctor consultation, counseling, testing and medicinal facilities. मेरी दवाई ख़त्म होने से पहले मेरे को दवाइयाँ मुहैया करा देते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या मेरे ड्राइवर भाइयों से। अपोलो टायर ने मेरे को सरकारी योजना के तहत भी जोड़ा है, जिसके लिए मेरे को पर मंथ 500 रुपये मिलते हैं। These programs and treatments at the Apollo Tyres healthcare centers are a part of the larger effort to eliminate TB by 2025.
Now, starting with the first highlight of the event, I would like to request Dr. Mansukh Mandaviya, sir, to virtually flag off 75 trucks with TB awareness messages across the nation. Thank you. Ladies and gentlemen, this is a pan-India flag off. Nutrition plays a vital role in sustaining TB treatment and recovery. Apollo Tyres Foundation has taken the commitment to provide nutritional support to 75 TB patients from the underprivileged community for 6 months until the completion of their treatment. This nutritional care and support are in accordance with the Government of India's advisory. This brings us to the second highlight of the event, distribution of the nutrition kits for the TB positive patients. Once again, requesting our chief guest, Honorable Union Minister, Dr. Mansukh Mandaviya, sir, to distribute the kits. I would call on the dais our beneficiaries who are availing healthcare services from Apollo Tyres Healthcare Center. Hariram, he is a driver by occupation. Sir? Sarvari Begum, she is a daily wage laborer. Ranjit Kumar, he too is a daily wage laborer. Ladies and gentlemen, this is Meera Devi, and she is a homemaker. And now we have Tinku, he's also a daily wage laborer. We have Ranjit Kumar. He's a daily wage laborer again. Thank you.
Ladies and gentlemen, now I would like to call upon Ms. Rolly Singh to speak on Government of India's initiative in TB elimination by the year 2025. Thank you. Respected Honorable Union Minister, Ministry of Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Shri Gaurav Kumar, Chief Financial Officer, Apollo Tyres Limited, representatives of various corporates, business associations, civil society organizations, and development partners, officers and colleagues from the Central TB Division, Ministry of Health. It is indeed my privilege to be here for the launch of Partnership Action Against Tuberculosis, PAcT. On behalf of the Ministry of Health, I would like to thank the organizers for inviting me for this occasion. As all of us know, PAcT is a collaborative effort of Central TB Division, Apollo Tyres Foundation, and the Government of India towards strengthening the national response against TB through enhanced mobilization and participation of industries, corporates, and business associations. As we all know, our Honorable Prime Minister had resolved to eliminate TB in the country by 2025, 5 years ahead of the global targets. It is a very ambitious goal, and each of us has a part to play in fulfilling this vision. It calls upon each of us to come together, contribute in our own capacity, and to make this goal a reality. The corporate engagement is one of the strategic priorities in the National Tuberculosis Elimination Program, as the corporate sector can play a crucial role in reaching to the unreached sections of society like our workers, vulnerable communities with TB awareness and prevention drive, active case finding, TB diagnosis notification, and linkages of TB patients with the National Tuberculosis Elimination Program. The Ministry of Health, along with USAID, with the aim of galvanizing corporates to join the fight with TB, against TB, launched the Corporate TB Pledge initiative in 2019. Till date, more than 300 corporates have taken the Corporate TB Pledge, and more than 100 projects led by the corporates are being undertaken across the country. I'm happy to see that the Apollo Tyres Foundation is a corporate TB pledge holder, and it is in the diamond tier, and it has been undertaking intensified TB-free campaign by engaging the heroes on wheels, which are our truckers, to create awareness of tuberculosis and reach out to a large target audience. Apollo Tyres Foundation has been doing good work for truckers and allied population to spread TB awareness and promote TB testing at 32 locations across 19 states. The initiative of 75 trucks branded with TB messages from 5 different locations, which our Honorable Minister has just launched, will certainly boost efforts to address TB among truckers' communities. These are one of the key populations to be reached out with TB awareness and prevention drive. As we are aware that under the National AIDS Control Program also, truckers were one of the main focuses for the campaign to tackle HIV. They have long hours of work and are on the road away from their families without any access to proper health care. So this is the right cohort to be addressed, and I'm happy that Apollo Tyres has come forward in this initiative. This is also in line with the 75 Corporates and 75 Cities campaign recently launched by the Central TB Division, with technical support being extended to the corporates by the Corporate TB Pledge Secretariat. The initiative is bringing together corporates across the country through various activities. The corporates have now come very actively forward to support the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan as well. As we all know, Nikshay Mitras are coming up across the country in support of TB patients, providing them nutritional support, and these are also our corporate TB pledge holders. The ATF has come forward and joined hands with the government on the PM TB Mukt Bharat Abhiyan, and for that you are deserving of our accolades and our gratitude. I would urge more and more corporates to come forward and actively participate in the National TB Elimination Program. And as we were just speaking about the 60 lakh truckers that can be reached out to through this campaign, it just comes to my mind, sir, that we have also gone for an MOU with NHAI, National Highway Authority of India.
as part of our outreach to various other ministries like Panchayati Raj and Rural Development, we thought NHAI being a big employer and having a network across the country would be a good partner to have in this endeavor. I would request Apollo Tyres to look at that MOU, and we can facilitate your working closely with NHAI in order to reach out through the various tolls that the NHAI has, a network of tolls across the country. You can directly give them flyers and use the agency of NHAI to reach out to the truckers even more closely. So I just thought I would share that idea with you while we are here on this forum. Once again, I would like to thank everybody who's involved in this project for being part of this endeavor, this humongous effort that we have to make for making India TB free by 2025. I would appreciate the efforts of the union as a technical partner in mobilizing and engaging corporates in this program. And sir, last but not the least, I would like to thank you for your leadership. Our Honorable Minister has been at the forefront. He's been taking meetings and reviews and constant oversight. सर, आपके नेतृत्व की वजह से हम आज यहाँ पर इस मौके पे कहने में सक्षम हैं कि हम शायद 2025 तक, निश्चित रूप से 2025 तक टीबी को भारत से जड़ से उन्मूलन करने में हम सक्षम होंगे। थैंक यू। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद। Thank you, ma'am, for your wonderful address on Government of India's TB elimination initiatives. I now call upon our chief guest, Honorable Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya, to speak a few words emphasizing the exigency of addressing TB collectively. अपोलो टायर फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी रोली सिंह जी, गौरव जी, सभी उपस्थित भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं अपोलो टायर फाउंडेशन को अभिनंदन देना चाहूँगा, जो सरकार के साथ सहयोग करके देश टीबी मुक्त बने इस अभियान के साथ जुड़े। मैं आज के अवसर पर इस लोगों को भी अभिनंदन करना चाहूँगा। 71,000 टीबी मित्र जो निक्षय मित्र के रूप में कोई टीबी पेशेंट को गोद लेके देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति अपना दायित्व अदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है और हिंदुस्तान की विशेषता रही है, और खास करके हेल्थ सेक्टर देश के लिए कभी केवल कॉमर्स नहीं रहा है, केवल सरकारी सेक्टर नहीं रहा है। क्या केवल गवर्नमेंट ही करेगी? क्या केवल हेल्थ सेक्टर में, या तो फार्मा सेक्टर की दृष्टि से मेडिसिन हो, हेल्थ सर्विसेज हो, उसको हम केवल कॉमर्स के रूप में ही देखेंगे? शायद विश्व के कई देशों में वहाँ हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन इंडिया में, हमारे देश में ये यस नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान का मॉडल है। सामाजिक दायित्व देश के हर व्यक्ति निभाता है। राष्ट्रीय दायित्व जब देश में आह्वान होता है तो देश उठा लेते हैं। मुझे याद आ रही है जब 7 सितंबर राष्ट्रपति महोदया ने निक्षय मित्र अभियान को लॉन्च किया था, और टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करते हुए राष्ट्रपति जी महोदया ने कहा था कि आइए देश के
आम नागरिक, आइए देश के कॉरपोरेट सेक्टर, एनजीओज, हर तबके के लोग, क्या हम सामाजिक अपना दायित्व को अदा करते हुए देश के हर टीबी पेशेंट को गोद ले सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2025 अंत तक देश को टीबी मुक्त करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की इस बात को चरितार्थ करने के लिए क्या हम एक जॉइंट एफर्ट नहीं ले सकते? और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक निक्षय मित्र पोर्टल को लॉन्च किया था, और निक्षय मित्र पोर्टल में देश में जो टीबी पेशेंट है उसकी सारी सूची उसमें रखी थी। उस वक्त 13 लाख पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो अभियान चलाया गया, इस अभियान के तहत हर टीबी पेशेंट के यहाँ हमारी आशा बहन, हमारे हेल्थ कर्मी, हमारे टीबी के साथ जुड़े हुए कर्मचारी पहुंचे और उसके साथ बातचीत करके कहा कि क्या आपको कोई गोद ले लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है? उसमें से 13 लाख में से 10 लाख से अधिक टीबी पेशेंट ने कहा कि जी नहीं, हमें कोई गोद ले लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस वक्त एक अभियान चलाया गया कि जो टीबी पेशेंट को गोद लेंगे उसको करना क्या है। दोस्तों, सरकार भी कर सकती है, कोई नई बात नहीं है। एक पेशेंट के पीछे गोद लेने के लिए जो काम करना था, एक काम महत्वपूर्ण है, खर्च महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार टीबी पेशेंट को निक्षय पोषण योजना के तहत प्रति महीने 500 रुपीज तो उसके अकाउंट में डीबीटी के द्वारा रखते हैं, डाल देते हैं, उसको फ्री मेडिकेशन मिलती है। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज इट दैट, महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे पेशेंट है, ज्यादातर पेशेंट, क्योंकि टीबी के लिए चलने वाला कोर्स लंबा होता है, उसका मेडिकेशन लंबे दिन तक चलता है, 6 महीने का कोर्स शायद होता है। तो बीच में से पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, अभी मुझे मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जब मेरे पास से किट ले रहे थे तब मैं मेरे टीबी मित्र को पूछ रहा था कि आप क्या काम कर रहे हैं? तो किसी ने बताया कि मैं दैनिक काम पे जाता हूं, मैं मजदूरी करता हूं। ऐसे लोग सतत काम में रहते हैं, अपनी आजीविका के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ता है, और इसलिए वो कम गंभीरता लेते हुए कई बार मेडिकेशन को छोड़ देते हैं, मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। हमने कहा कि निक्षय मित्र को, जिस पेशेंट को गोद लेते हैं, वो निक्षय मित्र पोर्टल पर आके वो डिसाइड करेंगे कि मैं, मेरे ब्लॉक के 10 पेशेंट है, पेशेंट का नाम नहीं लिखा होता है क्योंकि प्राइवेसी की वजह से वो टीबी पेशेंट का नाम पोर्टल पर आ जाए, वो अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए? तो उसमें एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंडर में जो गांव आते हैं, एक गांव में कितने पेशेंट हैं, 2, 3, 4, 5, एक ब्लॉक में कितने पेशेंट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कितना पेशेंट है, वो वहां नंबर फ्लैग हो जाता है। और उसके बाद वो पेशेंट है कौन, उसको जानने के लिए जो निक्षय मित्र बन के उसको गोद लेना चाहते हैं, वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट के टीबी ऑफिसर के साथ संपर्क करते हैं, ब्लॉक के टीबी ऑफिसर के साथ संपर्क करते हैं, उसको नाम दिया जाता है, उसका इंडिविजुअल नंबर दिया जाता है, और निक्षय मित्र उसके साथ बातचीत करते हैं। कई बार उसके घर पे चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 सितंबर को हमने लॉन्च किया था और 17 सितंबर यानी कि 15 दिन में 9 लाख से अधिक टीबी पेशेंट को गोद लिया गया निक्षय मित्र के द्वारा। और आज 71,000 हमारे निक्षय मित्र के द्वारा
71,000 मीन्स सब इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है। उसमें कई इंडिविजुअल है, कई एनजीओ है, उन्होंने एक ब्लॉक लिया हो, कई ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर है, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट लिया हो। मैंने कहा था मैं किसी को कॉल करता, या तो कई लोग ऐसा लोग भी मेरे पास आए थे, हम सारे स्टेट को गोद ले लेंगे। मैंने कहा जी नहीं, आपको सारे गोद नहीं लेना है। स्टेट के में जितना पेशेंट है सबको आपको गोद नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी के संपर्क में नहीं रह पाएंगे। आपकी इंडस्ट्रीज कहाँ है, तो कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, बहुत लेना चाहते हैं तो उसके अगल बगल में 2-3 डिस्ट्रिक्ट ले लो। दोस्तों, आज 13 लाख से अधिक हमारे टीबी पेशेंट ने किसी न किसी लोगों ने गोद ले लिया है। उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके संपर्क में है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने इंडिविजुअल बेस पर वो किसी के लिए कोई एनजीओ ही करे, ऐसा नहीं है। कोई कॉरपोरेट सेक्टर ही करे, कोई जनप्रतिनिधि ही गोद ले, ऐसा नहीं। मैंने भी मेरा दायित्व अदा करते हुए, मेरे ब्लॉक में 39 पेशेंट थे, मैंने 39 पेशेंट को गोद लिया। मैं रेगुलर महीने में एक बार मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे गांव जाता हूं, मेरे टाउन जाता हूं, तो मैं टीबी पेशेंट को प्रत्यक्ष जाके जैसे यहाँ किट दी गई वैसे किट देता हूं। मैं प्रत्यक्ष कॉल कर लेता हूं। केवल मैंने ही करा है ऐसा नहीं। मेरी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने भी तय किया कि हमारे राष्ट्रपति महोदया ने अपील की है, तो हमें भी निक्षय मित्र बनना चाहिए। मिनिस्ट्री एक इकाई के रूप में, यहाँ कौन सा क्षेत्र है, सुल्तानपुर क्षेत्र, सुल्तानपुर में सुल्तानपुरी, वहाँ टीबी पेशेंट है कई, क्योंकि वहाँ कई सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, उसको गोद लिया है। और हर महीने 4-4, 5-5 हमारे विभाग के ऑफिसर वहाँ इंडिविजुअल जाते हैं, किट बनवाते हैं, उसके साथ संवाद करते हैं, उसको इंडिविजुअल किट दे के आते हैं। दोस्तों, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हिंदुस्तान का संस्कार है। इतना ही नहीं, एक बार मुझे भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी मूल कैडर झारखंड है, और झारखंड में उन्होंने कई टीबी पेशेंट को गोद लिया है, और रेगुलरली उसके साथ पूछताछ भी करता रहता है, और उसको एक प्रति महीने न्यूट्रिएंट फूड ग्रेन्स के सहित एक किट भी का जीवन बचाया है। उसका सेटिस्फेक्शन होगा ना, ये सेटिस्फेक्शन आपको, आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, आप बहुत कुछ हो भी जाएंगे, आपको बहुत कुछ अच्छा पद भी मिल जाएगा, कुछ अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। दोस्तों, उससे आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे अधिक सेटिस्फेक्शन दर्दी नारायण की सेवा में आपको मिलेगा। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। दोस्तों, इस दिशा में हम आगे बढ़ के हम देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के साथ जुड़े। मुझे पक्का और पूरा विश्वास है, हमारे देश के ट्रेडिशनल कल्चर और संस्कार पर मेरा भरोसा है। मोदी जी ने उसके आधार पर ही जब 2018 में देश को 2025 अंत तक हम टीबी मुक्त करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया था। ये विश्वास को हमें चरितार्थ करना है। हम सब लोग साथ में, देशवासियों साथ में मिलके प्रधानमंत्री जी का संकल्प को पूरा करें, यही अपेक्षा है। आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। डॉक्टर मनसुख मंडाविया सर, थैंक यू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे साथ। इट वॉज इंडीड एन एनलाइटनिंग एड्रेस बाय हिम। Ladies and gentlemen, with this we come to the end of the event, Partnership for Action Against Tuberculosis. I would now like to invite Ms. Renika Grover to deliver the thank you note and conclude the event.
Thank you. Thank you, Harnoor. That was indeed a really, really interesting and a very insightful information, sir. I'd like to start my thank you by beginning with our chief guest, Dr. Mansukh Mandaviya,